So good afternoon, everyone, once again. So let's discuss the last part of solid waste management. I think so. We initiated the discussion the last day. That is, after discussing all the aspects of solid waste management, that waste to energy, in terms of incineration, composting, pyrolysis, gasification, then composting in detail, all kind of stuff in detail. So let's move to a very important aspect that I told you in the last classes. That is landfill, engineering landfill. Okay, it's the last option which is available. That is landfill. I told you, okay, every waste cannot be 100% converted to any other form. That is waste to energy. You can't convert every kg or gram of waste. So if you're using 1 ton, 30% is wasted and 70% is utilized. Similarly for the other processes also. And moreover, this process also waste some secondary waste like ash, fly ash, bottom ash, all kind of stuff. Ultimately, these ash ultimately find its way to the landfills. So I told you in the last class in the landfills basically. Okay, hold on. So basically, I told you in the last class, landfill is basically a huge chunk of land where a whole waste is being dumped inside the earth. And in Punjab, basically, we have a landfill site in Jirakpur, Derabasi, that is Nibogri fields, and how it look like, how it is engineering basically. Now see this. If you see this overall picture, I'm going to explain this thing in detail. Please concentrate on what I'm saying in this particular slide, and next slides I'll explain to you somewhat in detail what's going inside. But mostly I'm going to explain this in this slide only. So you take this slide very seriously, but all of you. So this is the landfill design basically. Okay, so this is landfill design and how it is being executed. I'm going to tell you. So if this is it's a landfill. See, I want to show you first of all. See this. Before actually going to see the landfill, I want to explain you certain things next slides. But see this. This is a monitoring well here, and this is monitoring well here. See, this is monitoring well upstream, and this is the downstream. Okay, this is Windows monitoring zone monitoring well here upstream, and this is the downstream. मैं इसका सबका फंक्शन भी बताने वाला हूँ. Just stay tuned for this kind of all the information. Then this is a landfill. Actual landfill sitting where the sitting landfill is there. Okay. So मैं बता चुका हूँ कि जितना वेस्ट आपका जनरेट हो गया, हजार्डस वेस्ट जनरेट हो गया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो लैंडफिल में जाएगा बच्चे. और जो इंसिनरेशन में जो ऐश बच के नीचे, नो सोल्यूशन, लैंडफिल. तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लैंडफिल जो ऑपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके हर एक सिटी में हर रोज की रोज टन्स के हिसाब से वेस्ट जनरेट होता है बेटा. ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, एरिया है, पॉपुलेशन एरिया है, इतना वेस्ट जनरेट होता है. कभी आपने सोचा है कि बेटा आपके घर वाला वेस्ट जो सारा निकलता है इतने मोहल्ले से, इतने हर घरों से, तो थाउजेंड्स ऑफ पर्टिकुलर होम्स एंड दे आर जनरेटिंग ह्यूज काइंड ऑफ वेस्ट सिंगल डे. कितने ट्रक्स डेली लोड होते हैं और कहाँ जाते हैं अल्टीमेटली. बेटा देयर इज नो सोल्यूशन. आज तो माउंटेन बनाओगे, दिल्ली माउंटेन बनाओगे, या इसको लैंडफिल करोगे. अगर सॉर्ट नहीं करते तो आधा वेस्ट पे चला जाएगा हमारा रिसाइकलिंग पे, और आधा वेस्ट लैंडफिल के लिए चला जाएगा. So, landfill तो required है ही है, जो मैं आपको बोल चुका हूँ. You can't escape away from the landfills. हाँ, landfill को कितने टाइम तक हम चला सकते हैं? For how many years we can really take this landfill? 20 years, 25 years, 30 years. Because if you're not taking engineering consideration with landfill, ये landfill अगर जल्दी भर गई तो ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी लैंड जो मैंने बताया था, it can be as huge as Thapar University. उसके बाद कोई यूज नहीं है, बंद कर दिया इसको. नो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, नो पॉपुलेशन, नथिंग. ठीक है जी.
पहले देखिए बेटा, इसका फंक्शन देखिए, ये मॉनिटरिंग वेल जो है, सी दिस इट इज गोइंग टू द ग्राउंड वाटर एंड इट्स आल्सो गोइंग टू द ग्राउंड वाटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, एंड दिस इज ग्राउंड वाटर फ्लो डायरेक्शन। तो ये किस लिए है बेटा? ये लैंडफिल से डिजाइन करते हैं, इसके डिजाइन में मैं बताने वाला हूँ आपको। अगर इस लैंडफिल से कुछ लीच हो गया, लीच क्या था मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, ये देखो, ये रहा लीचर जो मैंने बताया था। लीचर क्या आता है फिर समझाता हूँ बेटा आपको एक बार। जो लैंडफिल में हम इसको डिपॉजिट करते हैं, वेस्ट, hazardous waste, industry waste, community waste, every waste is being dumped over here. Okay, when all this waste is having a huge moisture content, when it's having huge moisture content and rain also falling continuously, so some rain particular precipitation also percolates into this particular thing, waste. So जो भी आपका excess moisture है वो लीच कर जाएगा और वो लीचेट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब ये देखो, ये लीचेट बाहर निकल रहा है तो अपने किस किस कंस्टिट्यूएंट्स में होकर निकल रहा है वो। So it can dissolve harmful components, very toxic components of the waste which is being deposited over here. So this leachate which is generated over here is extremely dangerous in terms of its composition. It may contain heavy metals, it can make toxic metals, it may contain very dead dangerous microorganisms also. So depending upon what kind of waste you're working with. So that's why you need to continuously monitor the landfill site upstream and downstream. So if you're taking a groundwater sample from here and here, if there is a change in the properties of the water sample upstream and downstream, this will obviously tell you there is something wrong going in between these two stations. And what is there in between two stations is a landfill. So this means something is leaching out from the landfill, which is ultimately going to the groundwater. Okay, I think so. First point is clear, all of you. बेटा अगली वाली स्लाइड मैं आपको डिटेल में नहीं करवाऊंगा, करवा दूंगा, लेकिन मोस्टली मैं इसी स्लाइड पे ज्यादा टाइम लगाने वाला हूँ बच्चे. Okay. Now see the second thing. If you see this Vendos zone monitoring well, this one. This is actually upstream and downstream in the soil. See this soil. Soil और clay कुछ भी हो सकती है चीज ना, तो आपकी soil है. अब ये देखो हमने यहाँ पे सैंपल क्यों लिया है. We are not waiting for the disaster to happen so that all the leachate should go to the groundwater. Now take the sample of soil from here and take the sample of soil from here. अब soil की properties अगर vary कर रही हैं तो this means something is wrong going on in the system. तो ultimately अगर हम soil की properties को पहले analyze कर लेते हैं, and we are finding some difference in soil properties like metals, all kind of things, hazardous chemicals, toxic chemicals in the soil downstream, this means something is leaching out from the landfill. Okay, then ultimately before actually it reaches the groundwater, we have enough time to correct. एक बार groundwater में पहुंच गया बेटा तो ये लाभ कैनाल ही बननी है बेटा, और कुछ नहीं बनना बच्चे, मैं आपको समझा चुका हूँ लाभ कैनाल पहले. So that's why you have these particular zones upstream and downstream, so that the soil properties can be, estimated. So if there's a change in soil properties in terms of its toxic nature, some hazardous components, this means something is being leached out or leaching actually from the landfill site. Is that okay? So ये दोनों चेक हमारे पास हैं. बट अगर ये लीचेट निकले ही ना बेटा, अब सबसे बड़ी बात ये एक इंजीनियरिंग डिजाइन है इसके लिए. We don't want the leachate should go to the soil and groundwater. So that's why when the landfill is being sited, it is totally engineering. That is how it's being designed. See this now. See this beta. If you see the design, if you see the outer lining, this one where my pen is there, this is black. If you see, yeah, this is what? This is plastic liner beta. See this is plastic liner, ये black वाला. अब प्लास्टिक लाइनर क्या होता है बेटा, मैं समझा दूं आपको. आप हमने सबने अपने घर में देखा होगा, घर में आपके जब न्यू कंस्ट्रक्शन होती है तो ऊपर लेंटर डलता है, लेंटर. उस लेंटर के ऊपर डलने के बाद जब टाइलिंग लगती है, टाइलिंग से पहले एक ब्लैक शीट वहां पे डाली जाती है जिसको हम तरपाल बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है, और इट्स अ बैरियर बेसिकली.
Why we are going to put that? ऊपर टाइल लगी बेटा, अगर टाइल से सपोज कुछ लीकेज होती है वाटर की, before it gets to roof, there must be a barrier between the tiling and the roof. That is a liner, जो प्लास्टिक वाला वहां पे लगाते हैं. क्यों? अगर एक बार पानी रूफ में पहुंच गया बेटा, आपको पता है कि वो स्ट्रेंथ वीक हो जानी है एंड द स्ट्रेंथ में कोलैप्स. सेम फंडा यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे. सबसे पहले हम प्लास्टिक लाइनिंग, एक मोटी प्लास्टिक लाइनिंग यहाँ पे हम ले डाउन करेंगे. Okay, and if you see the holes here, 1 2 3, according to the view I'm showing you, this is called secondary leachate collection pipes. These are called, they are leachate collection pipes, but this is secondary leachate collection pipes. पर एक बार समझ लो, फिर मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ इसके बारे में. ठीक है, these are secondary leachate collection pipes, and then you have this soil cover in between. Then if you see this black and white structure I'm showing you over here, this one, this is called compacted clay liner. You know what is compacted clay liner? You must have seen the clay. Now see, if the clay is being left open for some time, it becomes rock solid. If some treatment is being given to the clay, it becomes rock solid. और इतनी सॉलिड बन जाती है बेटा, इसमें कुछ भी परकुलेट नहीं कर सकता. तो सेम फंडा इज बीइंग adopted over here also. Same funda is adopted over here. So thick clay lining. Thick clay line के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे फिर 1 2 3. This is again a primary leachate collection pipes. Primary leachate collection pipes. Then sand. Then see, then this one. This is again a plastic liner. जैसे ये प्लास्टिक लाइन खत्म हुआ, इसके ऊपर हम ना वेस्ट डंप करना शुरू कर देंगे. जैसे वेस्ट डंप करना सॉल्ट वेस्ट डंप करना शुरू किया, जो अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग एरिया से आ रहा है, तो उसको इसमें डंप करना शुरू कर देंगे. कैसे हम इसको डंप करते हैं आगे बताने वाले हैं, पर सुन लो इसके लिए. ऐसा तो है नहीं, मैंने उस दिन आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसको कंपैक्ट करते हैं इसकी डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए. तो जितनी डेंसिटी इंक्रीज करोगे उतना ये वॉल्यूम कम लेगा पैक होने के लिए. यस और नॉट? आपके सामने बेटा, आप जितना उसको कंप्रेस करोगे, एक कागज लो, इतना बड़ा कागज जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हाथ से बिल्कुल प्रेस करके छोटा सा पीस बना दो. सेम कागज है, सेम पेपर है, यू आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम टू हैंडल. सेम थिंग इज बीइंग डन ओवर हियर. इट्स बीइंग कंपैक्टेड. वी हैव अ ह्यूज कंपैक्टर्स अवेलेबल एट द साइट. सो कंपैक्टर का मेन फंक्शन क्या है वहां पे? कंपैक्टर का फंक्शन है बेटा कि हम वेस्ट जो भी आ रहा है, दे आर बीइंग कंपैक्टेड. नो डाउट वी हैव एडवांटेज, but same time we have a drawback also. You can well imagine कि जितना उसको कंपैक्ट करेंगे उसके बीच का मॉइस्चर रिलीज होगा, बीच में मॉइस्चर बाहर आएगा ना बेटा. ओके, तो मॉइस्चर जैसे ही बाहर आएगा बेटा उस केस में, तो जो मॉइस्चर बाहर आएगा दैट इज इन फॉर्म ऑफ लीचेट. ओके, द मॉइस्चर इज अ फॉर्म ऑफ लीचेट. सो ये लीचेट बाहर आना शुरू हो जाएगा, और लीचेट इज वेरी 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 डेंजरस. तो जितने भी ये लैंडफिल साइट है, जब भी आप विजिट करोगे बेटा लैंडफिल साइट्स हैं, तो आप देखोगे वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है, बड़े बड़े रिएक्टर लगते हैं. और रिएक्टर का फंक्शन क्या है? लीचेट तो बनना ही बनना बेटा. वी कांट अवॉइड अ लीचेट, बट लीचेट शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैंडफिल थ्रू द कलेक्शन पाइप्स एंड टेकन टू द टॉप ऑफ द लैंडफिल. और उस लैंड में बड़े बड़े रिएक्टर लगे हैं, तो उस लीचेट को ट्रीट करके थ्रू वेरी टेक्नोलॉजीज इट इज डिस्कार्डेड. We don't want this leachate should remain here as such and should percolate so that it can be groundwater. Before that, we should extract through the leachate collection pipes. Done, beta. So these primary leachate collection pipes are purposely installed over here to collect the leachate that is being formed during the compaction. So it is being maintained effectively so that every like ml or ml of this particular leachate is being taken out at the top, at the site, and it can be treated. अब by the way कुछ डिजाइन फेलियर हो गया बच्चे, पर हमारे पास एक बहुत ही थिक क्ले लाइनर है यहाँ पे. The function of clay liner is to avoid penetration of leachate that is being formed in the landfill so that it can percolate downwards. No, these are the secondary leachate collection pipes. I told you, no?
Now, if you start getting leachate in the secondary leachate collection pipes, वो यहाँ इसका कनेक्शन ऊपर होता है बेटा, ऊपर. अगर यहाँ आना शुरू हो गया तो इसका मीनिंग पता क्या है बेटा? इसका मीनिंग है कि जो लीचेट है वो प्राइमरी सर्किट को पार करके क्ले नेटवर्क को क्रॉस करके यहाँ पहुंच चुका. ट्रीट को फिर भी हम कर लेंगे, बिकॉज सेकेंडरी लीचेट कलेक्शन पाइप्स का फंक्शन है कि वो लीचेट को यहाँ से कलेक्ट करके ऊपर लेके आए, उसको ट्रीट कर. लेकिन सेकेंडरी में लीचेट आना एक कंसर्न है. क्या कंसर्न है? कि इट्स नाउ क्रॉसिंग द बैरियर. सो नाउ इट्स टाइम टू रीमीडिएट इट, टू रीडिजाइन इट, सो दैट ये नीचे ग्राउंड वाटर क्लियर जाए. क्यों? हमारे पास फिर भी टाइम है. अगर सेकेंडरी तक पहुंच गया तो उसके बाद वी हैव अ थिक लाइनर ऑफ प्लास्टिक, सीधे प्लास्टिक लाइनर. सो प्लास्टिक लाइनर को भी क्रॉस कर गया, देन सॉइल की प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर रहे हैं. Then before it is to groundwater, we have enough time so that we can rectify the problem which are there in the landfill. I think so. I have made you clear with the whole discussion right now over here. Okay. Right now over here कि इसका क्या बुरा डिजाइन है. So बेटा ये सारी डिस्कशन LMS में मिलेगी, वीडियोस हम अपलोड करेंगे बच्चे. बट बिफोर दैट बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, ये डिजाइन हम आपसे पूछेंगे एग्जाम में, जो मैंने पूरा समझाया इतना टाइम लगा के. उसमें कहीं भी आपने ब्लंडर गलती की तो हम आपको मार्क्स 0 देंगे उससे. ठीक है? तो मैं पूछेंगे कंपैक्टेड क्ले लाइनर या सेकेंडरी लीचेट कलेक्शन पाइप, मैं भी इसका डिटेल पूछेंगे हम इसके बारे में आपको. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इनफ, टेकिंग इनफ टाइम टू टेल यू द पार्ट, डिजाइन एफिकेसी ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट. ओके, तो इस सबका क्या फंक्शन है बेटा? स्टिल यू हैव इन डाउट, यू कैन रेज योर हैंड और बिफोर क्लास एंड्स यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस. और जो भी मैंने बताया बेटा उसके कुछ ब्रीफ एक्सट्रैक्ट हैं जो मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपको गो थ्रू अपने आप को जाना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव सम प्लानिंग फॉर सिटिंग द लैंडफिल. एंड व्हेन यू हैव टू प्लान द सिटिंग ऑफ लैंडफिल, कि लैंडफिल कहाँ पे लगानी है, कितनी लगानी है, फर्स्ट कैलकुलेशन is being done for the size, and that calculation is being done on the basis of background information like that Patiala, your Chandigarh, your this Panchkula, your this area. इसकी background information में कि कितनी इसकी historical information है, क्या community size की क्या रही है, 5 years पहले क्या थी, 10 years पहले क्या है, 15 years पहले क्या थी, उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सट्रपलेट करोगे नेक्स्ट ईयर्स के लिए. ठीक है? देन अकॉर्डिंग टू दैट उस कम्युनिटी की डिस्पोजेबल क्वांटिटीज कितनी है. अल्टीमेटली ये सारी डिस्पोजेबल क्वांटिटी कहां पे जाएगी? लैंडफिल के अंदर. ठीक है? तो ये सब चीजें. देन इन प्लेस डेंसिटी, कितनी डेंसिटी अलाउड है आफ्टर कंपैक्शन उस एरिया में. उस एरिया में मॉइस्चर ज्यादा है तो नो डाउट भाई जितना कंपैक्ट ज्यादा करोगे उतना लीच ज्यादा बनेगा, लीच ज्यादा बनेगा, ट्रीटमेंट में खर्चे बढ़ जाएंगे, उतने चांसेस कंटामिनेशन के बढ़ जाने हैं. ओके. देन anticipation of prediction on possible changes. किस चीज के लिए? यार आज जो regulations हैं they may not be same at tomorrow, after 2 years, after 5 years. So what can be a regulation change? Facility change, competitive facility. You may have a different facility. आपने बड़ी landfill लगा ली है, भाई हम तो करेंगे. अरे कल 10 साल 5 साल बाद एक landfill और खुल गई वहां पे, एक प्राइवेट प्लेयर ने खोल दी. ठीक है? आप बैठे रहो आपके पास. ठीक है? तो वही चीज. तो बाकी और बहुत चीजें जो बेटा बताऊंगा आपको. Non-resident waste changes. Okay, non-resident means you're talking about some other community like STP, industry and some other communities. You have one type of industry, we have second type of industry, third type of industry. So industry keep on changing. तो waste भी change होता जाएगा, तो उस waste का disposal भी change होता जाएगा बच्चे. Okay. Then once you have all these parameters with you, then you decide the size of landfill. And after size, नंबर 2 स्टेप, साइज पता लग गया, अब मैं जगह ढूंढूंगा बेटे. इट्स नेसेसरी टू फाइंड द एप्रोप्रिएट साइट. साइट कौन सी होनी चाहिए बेटा? साइट का सबसे बड़ा पॉइंट ये वाला है. सो इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेस्ट फॉर द लोकेशन ऑफ साइट. तो ऐसी लोकेशन लेनी पड़ेगी. सी दिस लोकेशन इज सच दैट इट शुड बी इट शुड इंक्लूड द सिस्मिक जोन्स. लाइक सिस्मिक जोन इज वेरी सेंसिटिव जोन्स, watershed areas, floodplains, wetlands, airports. ठीक है? Why I'm saying that watershed, floodplains and wetland, they have a high water table. When they have a high water table, बहुत obvious chance है कि थोड़ी सी लीकेज हुई तो it can lead to contamination of groundwater. Airports,
एयरपोर्ट का पंगा ये है बट उस एरिया में ऊपर आप देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, जहाँ पे आपका वो रहता है ना, स्कैटर्ड रहता है, आपकी ये डंपिंग रहती है, जैसे दिल्ली वाली साइड देखी होगी आपने, उसके ऊपर बर्ड्स बहुत फ्लाई करते हैं बेटा, दे कीप ऑन फ्लाइंग एवरी टाइम. So if the birds are flying every time, the airport is near, it's a what of a chance that it can lead to some crash incidents. Then downwind direction of the to the area. पता ही है आपको, फाउल स्मेल आनी है बेटा, और अगर वो विंड डायरेक्शन मोस्टली टुवर्ड्स योर हाउसेज हुई, ठीक है, तो आपने लैंडफिल ये ले ली, प्रिवेलिंग विंड 9 months के लिए वाली है, मोस्ट ऑफ टाइम ये वाली है, तो इस साइड जो पॉपुलेशन रह रही है वो हमेशा ऐसी चीजें सूंघेंगी जो उनके पास कवर. Bad smell, odor smell. Okay, so see this, if you see the figure, you give a slope every time. Why slope? So that what waste is coming, it can easily slide down to the bottom and can be compacted, and see the compacted. So this is the filling sequence. Okay, you can go through this very fast, beta. An active landfill daily delivers a waste of daily deliveries of the waste are placed in layers. Okay, on the top of the liner. Liner भी बताया था मैंने, बट ऐसा लाइनर बेटा उसके ऊपर डालते गए, and no doubt it should be above the leachate collection system, because क्या होगा अगर लीचेज कलेक्शन सिस्टम नीचे नहीं होगा, उसके ऊपर थोड़ा लाइन नहीं मेंटेन करोगे, अभी दिखा था मैंने आपको. Why? Because you want to protect your leachate collection system. Because if in the waste you have a heavy metals, sorry, not heavy, sharp objects are there, not heavy metals, some heavy objects are there. Suppose some waste is there with very heavy and sharp objects are there. This heavy and sharp objects, they can really destroy the leachate collection system. और जैसे वहां पर डिस्ट्रॉय है, लीकेज होगी, आपको पता है सारा पानी नीचे. So waste also must be placed in a manner to keep the compactor wheels away from leachate collection system. Okay, so accordingly you have to do this. So how you are going to do it, how you want to layer your waste? So you have a different type of techniques like area or mount type, like in particular area, or in evacuation or trench type, जो मैंने अभी दिखाया आपको यहाँ evacuation of, okay, you go through these kind of things. First of all, it's up to you. Okay, read it and come back to me, all of you. So this is something very important beta. You see the landfill site. Okay, जो मैंने अभी बताया देखो वो सेम चीज है बेटा. This is the clay barrier, plastic liner, leachate collection, refuse cell, and daily cover. What is daily cover? So waste is covered at each working day with the soil or earth covers. तो अगर डेली कवर नहीं डालोगे बेटा लैंडफिल के जो भी वेस्ट डंप हो रखा है बेटा, वेस्ट आया बेटा आज 10 टन वेस्ट आया या 20 टन वेस्ट आया, कंपैक्ट किया और शाम को उसको कवर नहीं किया, शाम को कवर नहीं किया तो मेरे ख्याल से पूरी रात अगर कोई प्रेसिपिटेशन हुई रात को, तो थ्रू प्रेसिपिटेशन ऑल द वाटर विल कम डाउन एंड इट फॉर्म अ लीचेट. तो लीचेट की क्वांटिटी हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि आज बननी चाहिए 10,000 या सॉरी 1,000 लीटर, बना है 5,000 liter 5 times because the excess percolation. Okay, moreover daily cover is required to control diseases, vectors, rodents and minimize odor. सीधी सी बात, ओपन रखोगे rodents आएंगे, disease के vectors आएंगे, bacteria आएंगे, वायरस आएंगे, उस चीज के लिए minimize odor, it minimize the odor also because foul smell आएगी, है ना. So you need to design this kind of first of all. ठीक है जी. नाउ अब सबसे बड़ी बात जो इसमें हम करवाने वाले हैं, जो हम इसको कवर कर देंगे फटाफट और वाइंड अप कर देंगे पूरा, कि अब लैंड में कंपैक्ट करके डाल दिया हमने, है ना, एवरीथिंग इज बीइंग डंप्ड, लेकिन अंदर हो क्या रहा है उसके, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग इन द लैंडफिल. वेस्ट डाला, कंपैक्ट कवर, कंपैक्ट कवर, कंपैक्ट कवर करते गए हम. बेसिकली व्हाट इज एक्चुअली गोइंग इन द सिस्टम. ओके, so see this, if you have an idea you can see this, your waste or refuse which is being dumped in landfill is 70 to 80% is 70 to 85% is organic matter. See, organic matter is there, कहीं से भी आ रहा है. 1/3 जो है वो है non biodegradable, that is called recalcitrant.
Recalcitrant means non-biodegradable. 2/3 is biodegradable. Okay, this is basically, you can talk about what is moderate, what is biodegradable, what is readily. Food and yard waste is readily biodegradable. And paper trash, because they can be biodegradable, but it's very slow. Okay, so this landfill operation, once you have this, is being totally affected by the pH, temperature, all kind of moisture content, all kind of this parameter going to affect the stabilization of waste inside the landfill. Okay, now how the stabilization of landfill occurs? It basically occurs with 5 sequential steps. Okay, so in each 5 steps, in each these particular phases, the rate and characteristics of the leachate which is produced, number 1, gas which is being generated in landfill, are not only dissimilar but also reflect the microbial mediated properties. जो मैंने अभी कंपोस्टिंग में बताया था, कुछ बच्चों को याद है, पहले मेसोफिलिक एक्टिव होंगे, फिर थर्मोफिलिक एक्टिव होंगे. सेम फंडा इज हियर आल्सो. सो जो लीचेट बन रहा है वो पहले दिन 10 में 10th डे, 11th डे, 15th डे, 100 डे, 200 डे जो लीचेट बनता है उसकी प्रॉपर्टी वेरी करते हैं बेटा, क्योंकि ये लीचेट जो है एक टाइम पे सिमिलर नहीं रहेगा बच्चे. अब ये नहीं कहोगे लीचेट एक डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट है और उस वेस्ट में कुछ स्लो डिग्रेड हो रहे हैं, कुछ फास्ट डिग्रेड हो रहे हैं, कुछ अभी हो रहे हैं, कुछ बाद में हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उनकी चीज वेरी आ जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली 5 phases आर देयर इन लैंडफिल. सो आई एम कवरिंग ऑल दोस थिंग्स. First is the initial adjustment phase. What is initial adjustment phase, beta? It is just a particular acclimatization of microbes with their environment. ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको. ये क्या चीज है, फिर हम मूव कर जाएंगे आगे. रात को मेरे ख्याल से आपकी सब मम्मा जो है वो दही जमाती होंगी रात को. सो व्हाट इज एक्चुअली बीइंग डन? दूध लिया, ल्यूक वार्म किया, उसमें थोड़ा सा जाग डाल दिया, थोड़ा सा कर्ड डाल दिया हमने. ऐसा सुबह क्या हो गया कि वो पूरा कर्ड बन गया सुबह. तो इट्स माइक्रोबल लैक्टोबैसिलस आपका उसके बीच में है ना. तो जैसे ही लैक्टोबैसिलस के बीच में डालते हैं दूध के अंदर, तो लैक्टोबैसिलस एकदम तो दही बनाते हैं ना, उसका पूरी रात लगती है दही बनने में. करते क्या है लैक्टोबैसिलस, जैसे वो दूध में जाते हैं वो अपने सिस्टम को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्लेमेटाइज होते हैं उसके साथ. अच्छा अच्छा अच्छा, दूध में कार्बोहाइड्रेट है, उसमें ये है, सॉरी उसमें ये है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और उससे कंस्टिट्यूएंट को धीरे धीरे कंज्यूम करना शुरू करेंगे. और जैसे ही कंज्यूम करना शुरू करते हैं वो लैक्टोबैसिलस दूध के अंदर, वो अपने सिस्टम को अडेप्ट कर जाती है. अडेप्ट करके मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे. अब उसको हाँ शुरू करेंगे और उसको फाइनली एक जेली टाइप स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं. उस जेली टाइप स्ट्रक्चर को बोलते हैं कर्ड. सेम फंडा इज हियर आल्सो. आपका वेस्ट डंप हुआ, स्टोर किया, अगला आया, तो दिस मींस उसके अंदर जो बिल्कुल स्टोर हो चुका है, कंपैक्ट हो चुका है, जो मैंने रास्ते में दिखाया था आपको, अब उसमें एक्टिविटी स्टार्ट हो जानी है माइक्रोवेल की. पर हाँ, सबसे पहले एक्टिविटी स्टार्ट तब होगी माइक्रोवेल की जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे. नंबर 1, ग्रो करके उस चीज को एडजस्ट करेंगे, है ना. सो दिस इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन पीरियड. सी दिस कब होता है? अनटिल सफिशिएंट मॉइस्चर डेवलप्स. क्यों? मॉइस्चर चाहिए प्रॉपर, और प्रॉपर वॉट स्पेस चाहिए जिसमें ऑक्सीजन होगी, मॉइस्चर, ये सब कुछ होगा तभी माइक्रोबियल डेवलप करेगी. ओके, सो then after this phase, when the microorganisms are adapted to this kind of environment, they start consuming all kind of things and start decomposing organic waste present in the landfill. Now phase 2 is the transition phase. What is transition phase? Transition phase is the field, when the field capacity, you must be knowing what is field capacity. मैंने बताया था, डिस्कशन की थी. Field capacity is no doubt when the excess water is being removed, जो रह गया उसके बीच में उतना ही है. But this is before actually that phase occurs, there's a phase called transition phase. So in this phase, the field capacity is often extended and transformation from aerobic to anaerobic environment occurs. Void space की जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, ये आपका वेस्ट डंप हो रखा है, दिखा था ना, ये वेस्ट डंप हो रखा है वेस्ट के अंदर. तो ये वेस्ट के अंदर कुछ टाइम के बाद ट्रांजिशन फेज आ जाएगा. जितनी ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होगी, किसकी कंज्यूम कर ली? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने. Now this is a transition phase where these microorganisms are being transformed from aerobic to anaerobic conditions. Okay, that's why in this condition trend towards the reducing conditions established. Now reducing condition established हो जाएंगे इसके बीच में, that is shifting of electron donors from oxygen. ऑक्सीजन खत्म हो गई ना,
किससे शिफ्ट हो जाएगी? टू द नाइट्रेट एंड सल्फेट्स, because all oxygen is being consumed by microorganisms. So now the reducing condition will establish, that is trend shifts from electron acceptors oxygen. Oxygen now, oxygen है ही नहीं है, तो oxygen will not be electron acceptors now. So electron acceptors will be now your nitrates and sulfates, which accordingly get reduced to some other forms. किस फॉर्म में? जो बताने वाला आपको. ओके, किस फॉर्म में? ये रहा. Phase 3 is the acid formation phase. जब वो नाइट्रेट सल्फेट रिड्यूस होंगे तो वो एसिड ही बनेंगे बच्चे. स्मॉल अमाउंट नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस एसिड. Okay, so continuous hydrolysis of the solid waste, okay, with mix of this microbial conversion of biodegradable organic content results in the production of intermediate volatile acids. Just now I explained to you. Oops. And now once these acids are being formed, you observe decrease in the pH. Okay, so once the pH decrease, the system is stabilized. So bioactive biomass growth associated with the acid formers and rapid consumption of substrate nutrients are predominant features of this phase. Okay, so in this phase there's a biomass growth, acid former bacteria is growing. Okay, so this is a phase where actually these things are predominant. And no doubt phase 4 is the methane formation phase. What is methane formation phase? Now during this phase, the intermediate acids which are being formed, which I just explained to you right now, are consumed by the methane forming consortia. So methane forming consortia, you know what? Consortia is a mix of bacteria. If you say simple bacteria, single microorganism, this is a single you're talking about. E. coli, then lactobacillus, then this, okay? When all are present, which have a similar conditions, like this is a consortia of bacteria. Consortium is mix of bacteria. And now we have a methane forming consortia. This means there are different bacteria, different bacteria microorganisms there, which are actually leading to formation of methane from the acid which are formed in the last phase, third phase. So this methane forming consortia, they will convert these acids to methane and carbon dioxide. And accordingly, whatsoever the sulfates and nitrates are present, they are reduced. I told you, they are now in reduction stage to sulfites and ammonia. Once you have ammonia, you know ammonia will lead to the pH increase. And this pH increase, they will really support the growth of methane formers, because the methane former bacteria are easily sustained when the pH is high. Okay. And it's the last stage, that's the maturation phase. तो आपको पता चल जाएगा कि मीथेन बननी शुरू हो गई है, ये सब डिटेल बढ़ गई है, तो this approaching a maturation phase. And there is a final stage of landfill stabilization. Nutrients and available substrates become limiting factors. Means all our nutrients and available substrates are consumed. गैस प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो गैस प्रोडक्शन कम हो, इसका मीनिंग क्या है बच्चे? गैस प्रोडक्शन कम है, इसके बैक्टीरिया मरने शुरू हो गया. बैक्टीरिया कब मरेंगे? जब न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे, सबस्ट्रेट कम हो जाएगा. ओके, so it will continue, but slow degradation will continue until humic like substrate, जो मैं बताया था आपको, जो ह्यूमिक लाइक सबस्ट्रेट है बेटा, ये चीज, तो ये छोटी सी हम बोल सकते हैं कि अच्छी सी कंपोस्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट. ओके, so after discussing all these particular phases, if you have any doubt, you can ask me. Then I'll come to the last part of this particular discussion, that is landfill cap. Okay. So if you see the landfill cap, okay, what is landfill cap? Landfill cap, I told you ना कि landfill caps are designed. अब सुनो मेरी बात, ये landfill cap क्या है बेटा? अब 20 years, 25 years, ये पूरी लैंड भर गई है, लैंडफिल पूरी भर गई है, अब इसमें और डंप नहीं हो सकता बेटा. ठीक है, अब इसको बंद कैसे करना है, इसको कैसे कवर करना है? ऐसे इसको छोड़ नहीं सकते आप, तो उसका कैप डिजाइन करना पड़ेगा, टॉप कैप डिजाइन करना पड़ेगा बेटा. क्यों कैप डिजाइन नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से वो लव कैनाल वाली ट्रेजेडी हो जाएगी आपके पास.
Okay, so you must design the see this is the land cap. So see this, once the landfill reaches the designed height, ठीक है, तो इसमें से हम ऐसे इवैक्यूएट करते हैं ना, तो डिजाइन हाइट तक पहुंच गया जहां तक पूरा आ गया ऊपर, फाइनल कैप इज प्लेस्ड, व्हाई, टू मिनिमाइज द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ताकि पानी बीच परकुलेट ना करे, पानी परकुलेट कर गया तो लीचेट बनेगा, लीचेट बनेगा तो ग्राउंड वाटर में जाएगा। मिनिमाइज डिस्पर्शन ऑफ वेस्ट, वेस्ट डिस्पर्स ना हो जाए, वेस्ट डिस्पर्स हो गया पूरी लैंडफिल हिल जानी है बेटे आपकी। अकोमोडेट सेटलिंग, ताकि वो पूरा सेटल हो गया, स्टेबल हो जाए बेटे, अगर एक बार स्टेबल हो गया वो अंदर पूरा स्टेबल हो जाना उसने बीच पे, तो वो हिलेगा नहीं वो पूरा लैंडफिल। Okay, so see this, that lab cap may consist from top to bottom, from top to bottom. First of all, number one, the vegetation and supporting soil. So we do the vegetation on the top. अब vegetation क्यों ले रहे हैं बेटा, ये है टॉप सोइल और ऊपर लगा दिया हमने पेड़, वेजिटेशन लगा दी, पर माइंड इट, हम इसमें जो प्लांटेशन करने वाले हैं, जो ट्रीज लगाने वाले हैं, ट्री ऐसे नहीं लगाएंगे जिनकी रूट्स बहुत डीप है। क्यों, अगर रूट डीप वाले ले लिया हमने बेटा, तो माइट बी पॉसिबल दैट द वाटर व्हिच इज बीइंग टेकन बाय रूट्स इज बीइंग गिवन टू द लैंडफिल। ओके, तो प्लांटेशन का मीनिंग है कि अब जितना पानी ऊपर आता है वो प्लांट्स अब्सॉर्ब करने सारे, तो वी मस्ट select those plants whose roots are not so deep, moreover they are readily absorb all the water which is present at the top, बारिश भी आएगी, मॉइस्चर भी आएगा, फ्लो भी आएगा, top surface flow भी आएगा, so this plant should be able to absorb all those things. Then second is a filler and a drainage layer. Okay, the drainage layer is meant for removing the excess water so that it cannot percolate down to the landfill. No doubt. उसके बाद थर्ड है हाइड्रोलिक बैरियर। वाई हाइड्रोलिक बैरियर बेटा, पता ही हाइड्रोलिक बैरियर क्या है, अगर फिर भी परकुलेट कर गया, हाइड्रोलिक बैरियर विल अवॉइड percolating of water still further down, उसको वहीं रोक देगा। And no doubt, after hydraulic barrier there is a foundation for hydraulic barrier. You need a foundation. Why a foundation? पता है बेटा, क्योंकि नीचे लैंडफिल है, वेस्ट है, तो वेस्ट के ऊपर वो बैरियर टिकेगा नहीं, तो you need some barrier design on that, so that on that hydraulic barrier can be designed. ठीक है, and the last is not least gas control layer. तो गैस जो अंदर बनेगी बेटा, the gas can be taken out, है ना, so when the gas is taken out you can really avoid some bad in the system. ठीक है, चलिए 3-4 मिनट रह गए बेटा, इसको हम कर लेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा रह गया बस ये चीज है ना, फिर खत्म कर लेंगे इसको। So I think so I should stop here.